So now we start our discussion about the facial nerve. Before I teach any nerve, cranial nerve, again and again, I am going to write the functional components for you, which are efferent and afferent. Efferent are general, somatic, efferent. 3, 4, 6, 12. Special visceral efferent for the branchial arches. 5, 7, 9, 10. General visceral efferent, parasympathetic, 3, 7, 9, 10. Afferents, general somatic afferent for touch, proprioception, fifth nerve, only fifth nerve. Fifth nerve has 4 nucleus, mesencephalic nucleus for proprioception, spinal nucleus of trigeminal for pain and temperature of face, motor nucleus and chief sensory nucleus for general sensation. Then special visceral afferent, it is for taste, 7, 9, 10. Then general visceral afferent, it is for the viscera, 9 and 10. There is a special terminology called as special somatic afferent. Special somatic afferent used for the second nerve, eighth nerve. So 7, 9, 10, 7, 9, 10. Okay, 7, 9, 10. So by that we start with that information, we start drawing the table for describing functional components of facial nerve. So what is the component? Which is the nucleus? Which is the area of supply? So the firstly we write the efferent components. The first component is special visceral efferent. It is for the muscles developing from the pharyngeal arches, from the second arch. The nerve, facial nerve, is the nerve of the second arch, and therefore we call it these fibers are also called as branchiomotor fibers. Nucleus is the facial nucleus, which is there in the lower pons. Area of supply is muscles of face plus 4 muscles: stylohyoid, posterior belly of digastric, plus 3 actually, and stapedius. Okay, muscles of face plus 3. Muscles of facial expression. मैंने यहाँ पे just face लिखा. Okay, special visceral efferent. Then general visceral efferent. It is what? General visceral efferent, parasympathetic. So area of supply is submandibular gland, sublingual gland, lacrimatory gland. So the fibers arise from superior salivatory nucleus, okay, and lacrimatory nucleus. So these are the nuclei from which the facial nerve is going to be formed. Now we talk about the afferent components. Special visceral afferent. This is for taste. Special visceral afferent. For the anterior, taste of anterior to third of the tongue. Taste of anterior to third. Taste of anterior to third of the tongue. Fibers, we don't say arise from. Fibers of it relay in the nucleus of tractus solitorius. Nucleus of tractus solitorius. Then general somatic afferent. This is for the skin around the ear. Skin around the ear. And fibers are from the spinal nucleus of trigeminal. Spinal nucleus of trigeminal. This component is also used for proprioception of the muscles. ये component ना बहुत सारे cranial nerve जो भी muscle को supply कर रहे हैं इसमें ये component रहता है. Proprioception to be given to which nucleus? Proprioception of head, face, neck, mesencephalic nucleus of trigeminal. So this is the functional component of table showing the functional component. So you have to write component,
area, which area this component is meant for, and which is the nucleus from which the fibers arise. Okay. हो गया ना? Whenever we describe any cranial nerve, we start with the functional components. Then we write the nucleus. Then we write intraneural course. Then brainstem. Then intracranial course. Then exit. Which foramen? Exit from the skull. Then extracranial course. Extracranial course. Shukla. So we start now with the nucleus. So nucleus कहाँ पे है, कैसे आइडेंटिफाई करने का, कहाँ से आ रहा है बाहर ये नर्व, ब्रेन स्टेम जंक्शन ऑफ pons and medulla. So the nucleus is in the lower pons. Deep to the facial colliculus? No, no, not deep to the facial colliculus. Okay. So firstly we talk about the nuclei. So there are these 4 nuclei which are there in the lower pons from which the fibers actually are bundled together. Lacrimetry nucleus, inferior salivary nucleus, facial nucleus. Facial nucleus lies in the lower pons. This is abducent nucleus, what I have drawn. Now number 6. Facial nucleus is here. So now we start writing the intraneural course. So fibers arise from the facial nucleus. Intraneural course may they go backwards. Take a U-turn around, it takes a U-turn around the 6th nerve nucleus. ये मैंने आपको पॉन्स पढ़ाया था तभी बताया था. Take a, and these fibers going around the abducent nucleus cause an elevation in the floor of the fourth ventricle, which is called as facial colliculus. So deep to facial colliculus is facial nerve fibers and abducent nucleus, but not the facial nucleus. And then they take a U-turn, and then fibers come forwards between the medial lemniscus and lateral lemniscus, piercing the trapezoid body, and it appears at the junction. So fibers again move forwards, okay, and they appear at the junction of pons and medulla. Here there are 2 roots attached. It's not that it's facial nerve directly. There are 2 roots from which the facial nerve is formed. One is motor root, which is larger, and another is sensory motor root. It has taste sensation and it has the motor fibers or secretomotor fibers for these glands. That is called as nervus intermedius. Nervus intermedius. Okay. So there is motor root and nervus intermedius. What is nervus intermedius? It is sensory and secretomotor. It is sensory, whatever sensory area, taste sensations also, and secretomotor for the glands. So fibers for the gland are not in the motor root. They are in nervus intermedius. So what are the 2 roots of the facial nerve? Motor root and nervus intermedius. So we thought motor root and sensory, but then we don't call it sensory because it has sensory fibers and fibers for the glands. समझ लो? Okay. So now what happens is the facial nerve from there, now we talk about intracranial course. Intracranial course. It enters internal acoustic meatus.
internal acoustic meatus along with eighth nerve, then labyrinthine vessels. So these are the contents of the internal acoustic meatus: eighth nerve, labyrinthine vessels, nervous intermedius, and motor root of facial. Corner. What is nervous intermedius? बाजूचा. नर्वस नको हो, उभा राहा. बाजूचा. एप्रन. What is nervous intermedius? What is nervous intermedius? उभा राहायचं पटपट 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 पटपट. उभा राहायचं, येत नसेल नुसतं उभा राहायचं. चला लवकर. नर्वस इंटरमिडियस. समर्थ. व्हॉट इज नर्वस इंटरमिडियस? बाजूला. बाजूला. शुक्ला. व्हॉट इज नर्वस इंटरमिडियस? जोर से. Sensory and secretomotor fibers. So facial nerve has two roots which unite to form the nerve. One is motor root, which is for the muscles of facial expression. Second is nervous intermedius. We don't call it sensory root because it also has secretomotor fibers for all the glands it is going to supply. So motor root and nervous intermedius unite to form the facial nerve. Okay. Still they are separate here. Even in the internal acoustic meatus they are separate. So when we draw the internal acoustic meatus, in the internal acoustic meatus we show labyrinthine vessels, we showed the eighth nerve, we show motor root, and we show nervous intermedius. We show nervous intermedius. Now you come to know how it lies between the motor root and the eighth nerve, so called as nervous intermedius. Vishnu, what is nervous intermedius? क्या हो गया, तुम लोग को बात नहीं करनी है मेरे से? यस योरसेल्फ. हाँ बोलो. मैंने तुम्हारी तरफ बोला ही नहीं है, लड़कियों के बोल पूछ रहा हूँ मैं. हाँ दोनों लड़कियां खड़ी रहो, जो स्कार्फ पहना है ना. It has sensory fibers and secretomotor fibers of the facial nerve. बैठो. So now they unite to form. So it passes through the internal acoustic meatus. Now I am drawing a diagram here separately. ये इंटरनल acoustic meatus है, इसमें से ये लोग जा रहे थे, साथ में चल रहे थे, जा रहे थे. सडनली उसके फ्लोर में एक फेशियल कनाल आ जाता है. In this nervous intermedius, the seventh nerve, motor root and nervous intermedius, they unite in the facial canal, form to facial nerve. So facial canal ना ऐसा है, in the petrous temporal bone there is a facial canal. So facial nerve enters through the internal acoustic meatus. Eighth nerve continues forwards, it goes to the middle ear. Eighth nerve जो है ना, वो middle ear में चली जाती है. Facial nerve suddenly बीच में से गायब हो जाती है, because it enters the facial canal, जो ऐसा S shaped है. 3 parts, 1 going anteriorly, 2 going posteriorly, and 3 vertical, and it comes out through stylomastoid foramen. Okay. So when it passes through internal acoustic meatus, then enters Vishnu, it enters, which is this canal?
facial canal. Okay, so has a S-shaped course in facial canal. Then it comes out of stylomastoid foramen. It comes off stylomastoid foramen. Stylomastoid foramen. And then what is this? It enters parotid gland where it gives its terminal 5 branches. Where it gives terminal 5 branches. So up to this point it is clear. So अभी हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट करते हैं. Comes out of stylomastoid foramen. फ्लो चार्ट कंप्लीट कर रहा हूं मैं. Enters parotid gland. Parotid gland. And divides. So this completes our flow chart. Again I am going to the flow chart. Facial nerve from the facial nucleus, intraneural course, fibers go backwards, take a U-turn around abducent nucleus, form facial colliculus, come forwards, junction of pons and middle. What is there facial nerve there? No. Motor root and nervous intermedius. कोपऱ्यातला मुलगा. What is nervous intermedius? तो परत नुसतं उभा राहिला ना तर मारीन. What is nervous intermedius? बाजूचे हा. Sensory and secretomotor fibers of facial. Very good. So हे दोघं जण. Thank you. हे एंटर करतात कुठे? Where do they enter? Internal acoustic meatus along with 8th nerve, labyrinthine vessels. 8th nerve continues in the internal acoustic meatus, goes to the middle ear. 7th nerve enters the facial canal in the petrous temporal bone in close relation to the middle ear. Close relation. Sorry, मैं बार-बार 8th nerve middle ear बोल रहा हूँ. It goes to the internal ear. Sorry, goes to the internal ear. Then facial nerve comes out of which foramen? Samartha. Stylomastoid foramen. Then it enters Yash, which gland? Parotid gland, and divides. So that's about the course of the facial nerve. Now we will talk about the branches. 5 branches तो आपको मालूम है. There are 3 branches given in the facial canal. 3 branches given in the facial canal. 3 branches as soon as it comes out of the stylomastoid foramen. Now I will just modify this diagram little bit so that हमारे जो आगे बैठे हुए बच्चे हैं उनको दिखे. Okay. First branch is greater petrosal nerve. Greater petrosal nerve. Greater petrosal nerve is destined to supply 2 glands and 1 area of taste. I'll talk about it later. The next is nerve to stapedius. Nerve to stapedius muscle. This stapedius muscle is the muscle of the middle ear. Middle ear there is tensor tympani and stapedius. दो muscle होते हैं. This stapedius dampens the unnecessary sound attached to the footplate of steps. When the footplate of steps moves, right? So that it doesn't move excessively by unnecessary sounds. आप अभी यहाँ पे बैठे हो, रास्ते पर से गाड़ी जा रही है, आपको आवाज नहीं आ रहा है. Because unnecessary sounds are dampened by stapedius. So therefore, if stapedius is affected, paralyzed, it leads to hyperacusis. Hyperacusis.
बाजू के रूम में, तुम्हारे बाजू में क्या बात कर रहे हैं? विवेकानंद कौन से रूम में रहता है? तो कौन से रूम में रहता है? बाजू के रूम में कौन रहता है? फैमिली रहते हैं। तो आपके फ्रेंड्स, हॉस्टल जब आपको अलॉट हो जाएगा, इधर कुछ लोग हैं, इसके इधर कुछ लोग हैं, लोग एक बात करें, अरे वो ना या ऐसा, सब सुनाई देगा आपको, हाइपर अकोसिस। बट देन आपका लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। ये ऐसा चौक भी ऐसा गिरेगा, इट विल अपियर टू लाइक अ बिग साउंड। पिन ड्रॉप, ड्रॉपिंग ऑफ अ पिन भी, अरे काय को पिन गिरा रहा है यार। सो इतना ये हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है आदमी। सेपेडियस। देन कॉर्डा टिम्पैनी, बात मत करो, कॉर्डा टिम्पैनी। Chorda tympani is again destined to supply two glands and one taste. I'll come back to this details. टू ग्लैंड्स तो मालूम है, अरे ये तो बच्चे पहले से बोल रहा है, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल, एंड टेस्ट ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, टेस्ट ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग. Greater petrosal, two glands, lacrimal glands, palatine glands. There are glands in the palate also, and one taste, taste of palate. पैलेट में भी टेस्ट होता है, ओके। हम लोग को ज्यादा कुछ स्पाइसी खाए तो एकदम उधर भी ये होता है, वहां पे भी ग्लैंड्स होते हैं थोड़े से. दैट्स हाउ यू सी, ओपन योर माउथ, यू सी द पैलेट इज ऑल्सो वेट, बट मेन लैक्रिमल ग्लैंड. So greater petrosal is for lacrimal gland, chorda tympani is for, इधर कुछ इंजरी हो गया एक्सीडेंट में, and fibers going to submandibular gland unite with fibers going to lacrimal gland. दोनों एक ही नर्व के अंदर है ना फाइबर्स. सो एवरी टाइम आदमी खाएगा रोएगा, बिकॉज खाएगा तो सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएंगे, और खाते खाते तीखा है क्या, नहीं तीखा नहीं, गुलाब जाम खा रहा है फिर भी रो रहा है. दीज आर कॉल्ड एज क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम बोलते हैं उसको, crocodile tear syndrome. What happens? Fibers going to the submandibular gland unite with the fibers going to lacrimal gland, greater petrosal. Chorda tympani के fibers greater petrosal से unite होते हैं. Okay. As soon as it comes out, as soon as it comes out, it gives three branches: posterior auricular nerve, posterior auricular nerve, sensory to the skin around the ear, sensory to the skin around the ear. Nerve to posterior belly of digastric, anterior belly of digastric develops from first arch, so supplied by mandibular nerve. पोस्टीरियर बेली डेवलप्स फ्रॉम सेकेंड आर्च. मसल बनाया है, एमसीक्यू के लिए बनाया है भगवान ने, सोच के कि इस पे एक अच्छा एमसीक्यू बनेगा, इस पे एक अच्छा वाइवा क्वेश्चन बनेगा. गॉड ऑल्सो वाज थिंकिंग लाइक दैट, यार इसको एंटीरियर बेली अलग आर्च से, पोस्टीरियर बेली अलग आर्च से, एंटीरियर का नर्व सप्लाई अलग, पोस्टीरियर का नर्व सप्लाई अलग. सो पोस्टीरियर का क्या है? फेशियल नर्व. एंटीरियर का क्या है? मैंडिबल, सेकेंड आर्च. Then stylo, nerve to stylohyoid, nerve to stylohyoid, nerve to stylohyoid. Okay. तीन नर्व्स, सो तीन नर्व्स फेशियल कैनाल में, तीन नर्व्स स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से बाहर आने के बाद. स्टाइलोहॉइड मसल के लिए एक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के लिए एक, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व. शुक्ला के आगे जो सो रहा है उसको जगाओ.
उसके बाजू में है, उसको खड़ा करो। हाँ बोलो, क्या है 3 नर्व्स इन द फेशियल कनाल? जोर से। हाँ, ग्रेटर पेट्रोजल, nerve to stapedius and chorda tympani. Then it enters the parotid gland और वहां पे 5 ब्रांचेस। गुड मॉर्निंग। 5 ब्रांचेस तो मालूम है आपको, सर्वाइकल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सॉरी टेम्पोरल, ये नीचे सर्वाइकल, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। ओके, सो टोटल 5 और 3 और 3 कितना हो गया ब्रांचेस? 5 + 3 8 + 3 11 ब्रांचेस। डैमेज कहां पे हुआ है? फेशियल नर्व पैरालिसिस। बेल्स पाल्सी इज व्हेन डैमेज इज हियर, बेल्स पाल्सी, उसमें खाली फेशियल नर्व पैरालिसिस और डायगैस्ट्रिक वगैरह। बट व्हेन डैमेज दे से इज in the internal acoustic meatus, then addition to this facial symptoms there will be no salivation or reduced salivation, because khali parotid gland contributes only to 25%, 75 comes from submandibular gland. Reduced salivation, रोने को आ रहा है बट आंसू नहीं निकल रहे, no lacrimation. Okay, no lacrimation, no salivation, hyperacusis और नो टेस्ट, खाने को भी नहीं हो रहा है इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ, मेन टेस्ट एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में ही होता है। सो समझो फेशियल नर्व कितना इंपॉर्टेंट नर्व है हमारे बॉडी को। सो व्हेन द डैमेज इज इन द इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स बिफोर द फेशियल कैनाल, अपार्ट फ्रॉम ये तो है, ये तो आड़ा टेढ़ा फेस होने वाला है, उसके साथ साथ और गिफ्ट क्या है आपको? आपको मतलब अफेक्टेड पर्सन को, हाँ, reduce lacrimation, reduce salivation, no taste in the anterior 2/3 और hyperacusis, और सुनाई दे रहा है। डॉक्टर खाली पूछे कैसा है, अरे भाई चिल्ला काय को रहा है, चिल्ला काय को, so small sound also appears larger. Okay, so that's not the end of the facial nerve. Of course, I had spoken to you that upper half of the face has bilateral representation in the cortex. So in case of supranuclear palsy, अपर हाफ एस्केप्स पैरालिसिस, याद है क्या? मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा, अपर हाफ इज रिप्रेजेंटेड इन बोथ द कॉर्टाइसेस, सो सुप्रान्यूक्लियर। सो व्हाट वी करंटली वी वर स्पीकिंग वाज ऑल इंफ्रान्यूक्लियर लीजन्स बिलो द न्यूक्लियस, उसमें वेदर इट इज एट साइलोमेस्टेड फोरामेन, वेदर इट इज इन इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स, सो बिफोर द फेशियल कैनाल। तो ये 3 नर्व्स के और सिम्टम्स ऐड हो जाते हैं। बट फेशियल नर्व न्यूक्लियस के बियॉन्ड अगर हो गया लीजन, तो ओनली द लोअर हाफ of the face is paralyzed, upper half is represented bilaterally. How do the fibers reach submandibular gland? It starts from superior salivatory nucleus, nervus intermedius, facial nerve, chorda tympani branch, chorda tympani joins lingual। ये एक डायग्राम हम बार बार ड्रॉ कर रहे थे, याद है कि आपको? हायोग्लॉसस, लिंगुअल, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, इसमें खाली एक ऐड करो, कॉर्डा टिम्पैनी। कॉर्डा टिम्पैनी जॉइंस लिंगुअल, गिव फाइबर्स हियर, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, और उधर से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इमीडिएटली गो टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कोई दूसरा सेपरेट नर्व नहीं है, सीधा ग्लैंड यहां पे है। सो हाउ डू द फाइबर्स रीच? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई
How do they reach the submandibular gland? हाँ, रिपीट करो. Superior salivatory nucleus, Rahil. Superior salivatory nucleus, nervous intermedius, facial nerve. डायरेक्टली फेशियल नर्व क्यों नहीं बोला? बिकॉज वो यूनाइट हो गया. कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच, कॉर्डा टिम्पैनी जॉइंस lingual, from lingual to submandibular ganglion, from there to submandibular gland. आज आपने दो पाथवेज देखे. एक था इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से जाने वाला, दूसरा था ऐसे तीन पाथवेज है. चार है एक्चुअली, बिकॉज चार गैंग्लियन है. ओटिक गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड सीलियरी गैंग्लियन फॉर द आइरिस. 3, 7, 9, 10. Now the last one. Okay. So let's track the fibers. आप इतना रोते हो ना, रोते हो, आपको रोने को आएगा उसका ट्रैक देख के. समर्थ, चालू करते. लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, नर्वस इंटरमीडियस. ओके, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, नर्वस इंटरमीडियस, उसके बाद फेशियल नर्व, फेशियल नर्व. लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, नर्वस इंटरमीडियस, फेशियल नर्व. Which branch of facial nerve carries fibers for it? Greater petrosal nerve. What joins greater petrosal? Deep petrosal. It is carrying sympathetic fibers from the plexus around the internal carotid artery in foramen lacer. Then nerve to pterygoid canal. Nerve to pterygoid canal. Then that nerve to pterygoid canal relays in pterygopalatine ganglion. These are preganglionic fibers. I'll repeat again. Lacrimetry nucleus, nervous intermedius, facial nerve, greater petrosal. ये पैरासिम्पैथेटिक कैरी कर रहा है. सिंपैथेटिक कहाँ से आते हैं? डीप पेट्रोजल. यूनाइट टू फॉर्म नर्व टू रिलेज इन टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. अभी हमारे पास चैलेंज है कि वो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन अंदर इधर है, वहां से लैक्रिमल ग्लैंड तक जाना है. ओके, so from there the fiber enters the maxillary nerve branches of the maxillary nerve. Okay, and the branch is the zygomatic branch, which gives zygomatico-temporal branch, which gives fibers to lacrimal nerve, and from there to lacrimal gland. परत सांगतो. पोस्ट गैंग्लियोनिक to the zygomatic branch of maxillary, to zygomatico-temporal branch. Just check whether it is zygomatico-facial. Like maybe zygomatico-facial also. Zygomatico-facial. Then lacrimal. Now this lacrimal nerve is branch of ophthalmic. तो सोचो ये यहां तक फाइबर पहुंचाने के लिए फेशियल नर्व में से फाइबर गो टू मैक्सिलरी, फ्रॉम मैक्सिलरी to a branch of ophthalmic which is lacrimal and there to lacrimal gland. तो यहां तक का जरा सा इजी है, आगे का याद रखो. zygomatic branch, zygomatico-facial and lacrimal. Okay, so before I end, I'll revise.
lacrimetry nucleus, nervous intermedius, facial nerve, greater petrosal, deep petrosal unites with nerve to pterygoid canal, pterygopalatine ganglion, zygomatic branch of the maxillary, zygomaticofacial branch, lacrimal nerve, lacrimal nerve which is branch of ophthalmic, then to lacrimal gland. Okay, thank you.